Assalamualaikum, dear student of class 8. I know you are all very well, and first of all, welcome to my period. So today our lesson is lesson 9 and page number 52. Shabash, beta hurry up, open your textbook and page number 52. And lesson name is Skyways. Lesson name is Skyways. Okay. Lesson name is Skyways. So, are you ready, beta? Open your textbook, page number 52. Hurry up. Okay. So I will read. Lesson 9, Skyways. Sky basically आसमान, फलक. Ways रास्ता, तरीका, नमूना. Okay, शाहराओं. We think today of aeroplanes as machines that travel at a high speed. अॼु असीं सोचूं था त हवाई जहाज़ जीअं मशीनूं त सफ़र कनि थियूं हाई स्पीड तेज़ रफ़्तार सां. पर दी अर्लीस्ट एरोप्लेन्स डिड नॉट ट्रेवल वेरी फास्ट. पर शुरूआती जहाज़नि माना तमामु तेज़ीअ सां सफ़र न कयो. दी फर्स्ट एरोप्लेन ट्रेवल्ड एट अबाउट 8 miles per hour. पहिरियों हवाई जहाज़ सफ़र कयो तक़रीबन 8 मील पर आवर कलाक में. That was in 1903. इहो हो 1903 ईस्वी में. As the years passed, जीअं ई साल गुज़रिया, and the design of aircraft improved, ऐं नमूनो जहाज़ जो तब्दील थियो या इम्प्रूवमेंट तब्दीली आई. स्पीड्स बिकेम रफ्तारूं थियूं स्टेडली ग्रेटर मुसलसिल लगातार वधीक तेज़. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार माना ॿी दुनिया जी जंग जे आख़िर में रॉयल एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट जेट इंजन सां वाज फ्लाइंग 50 miles per hour. उॾाम जंहिं कई 500 मील पर आवर कलाक में. बट सोन पर जल्दी एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर्स यानी खाको तैयार कंदड़नि वर फेस्ड मुंहुं ॾिनो हो विथ अ ग्रेट न्यू प्रॉब्लम, हिकु वॾे नए मसइले सां. एंड टेस्ट पायलट्स ऐं आज़माइश कंदड़ पायलट पीपल हू ट्राई आउट न्यू क्राफ्ट, उन्हनि कोशिश कई नए जहाज़ जी. वर फेस्ड विथ अ न्यू डेंजर, मुंहुं ॾिनो हुओ हिकु नए ख़तरे सां. दी साउंड बैरियर, आवाज़ जी रुकावट. When the war ended, जॾहिं जंग जी ख़ात्मो थियो, everyone was talking about something called a sound barrier. हर हिकु ॻाल्हाए रहियो हुओ कंहिं शइ बाबति जंहिंखे सॾियो वञे थो साउंड बैरियर, आवाज़ जी रुकावट. This was what aircraft pilots had to meet. This was इहो हो छा जहाज़ उॾाइण जा पायलट्स हेड मीट मिलिया हुआ. when जॾहिं their machines flew at the speed of sound, जॾहिं उन्हनि जूं मशीनियूं फिलियूं उॾामियूं हवा जी रफ़्तार ते. फ्राइटनिंग स्टोरीज़, ख़ौफ़ज़दा कहाणियूं वर टोल्ड अबाउट इट, ॿुधायूं वयूं हुयूं इन बाबति. पीपल स्पोक अबाउट एयरक्राफ्ट, माण्हुनि ॻाल्हायो एयरक्राफ्ट बाबति. शेकिंग देम सेल्व्स, शेकिंग चुप कंदे पंहिंजो पाण टू पीसेस,
टुकड़नि में एज़ दे पास्ट जीअं उहे गुज़रिया थ्रू दी साउंड बैरियर आवाज़ जी रुकावट मंझां whenever an aircraft crashed on a test flight जॾहिं हवाई जहाज़ टकरायो एयरक्राफ्ट ऑन दी टेस्ट आज़माइशी हवाई ज़ोर तबाह थियो दे शॉक देयर हेड्स उन्हनि पंहिंजे मथनि सां पुट चुरप कई शौक़ लोॾाया इट्स दी साउंड बैरियर इहो आहे आवाज़ जी रोक इहा आहे आवाज़ जी रुकावट दे सेड उन्हनि चयो दे विल नेवर गो थ्रू इट इहे कॾहिं बि न वेंदा इन मंझां The speed of sound is 762 mph at sea level. आवाज़ जी रफ़्तार आहे 762 mhp at sea level सामुंडी सतह ते. It changes according to the warmth of the air. या तब्दील थिए थी मुताबिक़ warmth of the air हवा जे गरमाइश सां and height above the ground ऐं मैदान जी हाइट ऊंचाई एट 36,000 feet 3,600 फुट it is 660 mph 660 mph थी but an aircraft flying at 660 mph at sea level पर जॾहिं एयरक्राफ्ट उॾामियो 660 mph एट सी लेवल ते वुड नॉट बी ट्रेवलिंग उहे न पियो चुरपुर करे सघे सफ़र करे सघियो एट द स्पीड ऑफ साउंड माना हवा आवाज़ जी रफ़्तार ते टू मेक दिस प्लेन उन्हनि ठाहियो हमवार द स्पीड ऑफ साउंड वाज कॉल्ड मैच 1 कंहिं बि जिस्म जी रफ़्तार जो तनासिब चौधारी फ़िज़ा में आवाज़ जी रफ़्तार सां गॾु जंहिंखे सॾियो वञे थो आवाज़ जी रफ़्तार कॉल्ड मैच 1 इट वाज क्लियर टू experts that something sinister did happen to an aircraft as it approached Mach 1 इहो माना इट वाज़ क्लियर टू एक्सपर्ट्स माहिरनि वाज़े कयो हो डेट त समथिंग सिनिस्टर का शइ ख़राब थी डिड हैपन थींदी एन एयरक्राफ्ट सां एज़ जीअं इट अप्रोच जीअं इहो साम्हूं पहुचते थियो मैच 1 द एक्सपर्ट्स थ्रो थाट माहिरनि सोचियो दे न्यू उन्हनि ॼाणियो वाट इट वाज़ इहो छा हो because the aircraft it was traveling so fast छाकाणि एयरक्राफ्ट सफ़र करे रहियो तमामु तेज़ assault of wall of air was built up in front of it हिकु हवा जी दीवार तामीर थी उन जे अॻियां दी शॉक टुकड़ा थिया that came from hitting उहो आहे उन सां टकराईंदे this was इहो हो great enough काफ़ी वधीक टू डिस्ट्रॉय एन एरोप्लेन तबाह थियो जहाज़ मैनी टेस्ट पायलट्स डाइड आफ्टर गोइंग अप केतिराई आज़माइशी पायलट्स डाइड फोत मरी विया आफ्टर गोइंग अप मथे वेंदे इन न्यू एयरक्राफ्ट हिकु नए एयरक्राफ्ट में टू फाइंड आउट ॻोल्हण लाइ मोर एंड मोर वधि खां वधि अबाउट द साउंड बैरियर हिकु अबाउट दी साउंड बैरियर हिकु आवाज़ जी रुकावट बाबति इन इंग्लैंड में वर्क वाज स्टॉप्ड कमु बीठो हो बंदि कयो वियो हो ऑन ऑल एरोप्लेन्स डिज़ाइंड सभिनी हवाई जहाज़नि जे नमूननि जो टू फ्लाई फास्टर तेज़ उॾामण देन साउंड आवाज़ खां Tests were made with models to avoid risking more lives in the fight against the unknown power. Tests were made with models माना आज़माइश कंदड़ वारनि मेड ठाहिया नंढा नमूना टू अवॉइड रुकजण लाइ रिस्किंग ख़तरे खां मोर वधीक रहण इन दी फाइट जंग कंदे अगेंस्ट दी अननोन पावर माना हिकु अननोन अणॼाण ताक़त खां Today, people talk about airliners.
माण्हू ॻाल्हाइनि था मुसाफ़िर तयारनि बाबति। That will travel faster than sound, जेके सफ़र कंदा साउंड खां वधीक तेज़। Just after the second, फ़क़ति हिकु सेकेंड खां पोइ, वर्ल्ड वार दुनियाई जंग, there was not a single man, उते न हो हिकु अकेलो माण्हू इन दी वर्ल्ड दुनिया में, who knew, जंहिं ॼाणियो, what the effect on the man, त छा असरु पवंदो माण्हूअ ते, are an aircraft ते, would be of traveling faster than sound, माना सफ़र कंदे आवाज़ खां वधीक तेज़। all that anyone knew, सभिनी ॼाणियो त was that there was a problem, त उते मसइलो आहे, connected with it, इन सां गॾु सलाहियल। but no one was quite sure how what problem could be solved, पर कंहिं बि न मतिलबु हो कि त इन मसइले खे कीअं सॉल्व करे सघिजे थो। experts thought, माहिरनि सोचो, that the sweeping back, तेज़ीअ सां गुज़रंदे बैक वापसि, the wings, परनि सां, of plane, जहाज़ जा, would help to solve it, मदद कंदा इन खे हल करण में। but they could only be sure of this after someone had actually, but they could only be sure, पर उन्हनि खे फ़क़ति यकीन हुओ of this after someone इन खां पोइ had actually flown through the sound barrier। in the USA tests, USA जा आज़माइश करण वारा were being made, उन्हनि ठाहियो हो with a rocket aircraft, हिकु रॉकेट एयरक्राफ्ट। it was the Bell X-1, जंहिंखे सॾियो वेंदो हो Bell X-1। the man who made it, माण्हूअ जंहिं इहो ठाहियो, said that, चयो त one day, हिकु ॾींहुं, it would fly at more than 1000 miles an hour, हिकु ॾींहुं इहो 1000 मीलनि खां, कलाक में 1000 मीलनि खां वधीक उॾामंदो। in this machine, इन मशीन में कैप्टन चार्ल्स ईगर had flown at, उॾामियो हो at Mach 0294, that is just over 9/10 of the speed of sound। at this speed he had left the shock of the sound barrier, his aircraft had been shaken by powerful blows, but he believed that he could go through the sound barrier। in the Bell X-1, it was a tiny machine with very short wings, and it was taken into the air by a huge 4-engine bomber। on October 14, 1947, कैप्टन येगर took off, रवानो थियो as a passenger, हिकु मुसाफ़िर वांगुरु इन सुपर फोर्ट्रेस, बुलंद आवाज़ सां बम्बार फ्रॉम द सीक्रेट एरोड्रोम, यानी हवाई उड़ाम, in the desert of California। the little Bell X-1 was in a bamboo bay ready to be dropped from the bomber। at one time above the earth, Captain Yeager climbed into cockpit of the rocket plane। at 1 mile above the earth, माना धरतीअ ते 1 मील मथे, कैप्टन येगर climbed into the cockpit, माना कैप्टन येगर मथे चढ़ियो cockpit of the rocket plane, हिकु रॉकेट जहाज़। 5 minutes later, 5 मिंटनि खां पोइ, he was dropped from the bomber, ही किरियो बम्बार खां। at once he fired the rocket motors, at once आखिरकार हिन fired the cock motors, then उन खां पोइ he put the X-1 into the climb up he flew into the clear blue sky 8 miles above the earth। he stopped climbing, he flew level and looked at the needles on his instrument panel। he was traveling at Mach 0.92, he switched on all the power of his rockets and headed
into the sound barrier. Again he felt his aircraft shaken by powerful blows, but he held from the controls and added speed. His eyes on the needle in front of him, Mach 0.94, Mach 0.96. The X-1 was shaking in a frightening fashion. Still, Captain Yeager pushed up the speed, Mach 0.98. Captain Yeager landed only 14 minutes after he had been dropped from the bomber. In the short time he had made history. He had become the first man to travel faster than the speed of sound. ही माना पहिरियों माण्हू हो जंहिं वधीक सफ़र कयो तेज़ कयो than the speed of sound माना आवाज़ जी रफ़्तार खां. Now that Yeager had passed through the sound barrier and lived to tell the tale, other pilots would do the same. They would fly an aircraft similar to the one in which he had flown. What he had learned about the so-called sound barrier would help them. A year later, a man flew faster than sound for the first time over England. He was John Derry, who dived through the sound barrier in the Havilland 108. Since then, the official word speed record has been taken well past the speed of sound by jet aircraft. In the world of tomorrow, passengers will travel faster than the speed of sound in mighty new airliners. Men like Captain Charles Yeager will have made it possible for them. Comprehension and vocabulary. Find these words in the passage, note how they are used, and then use them in sentences of your own. Expert, shock, connected, fashion, official. Say which of the following statements are true and which are untrue. Be careful. Do not say that something is true if it is only sometimes true. Remember too that there is a difference between someone knowing and thinking that he knows. Whenever an aeroplane crashed on the test flight, this was caused by the sound barrier. False. The speed of sound is always 762 mph. False. The speed of sound grows less with height. True. Before Captain Yeager made his flight, the expert knew what a sound barrier was. False. This exercise you will solve yourself. Now today our lesson, our topic have finished. So tomorrow I will meet you again, new topic, new lesson. So thank you so much and wish you very best of luck.